All right, hi everyone. Good morning. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Lecture 2 कहाँ तक हो गया था? मुझे एक आइडिया दो. Like, did we Applications of chemical. application chemical equilibrium तक आ गए? सेकंड एप्लीकेशन शुरू किया था. Reaction quotient कर लिया था. हाँ किया था. हाँ यार. और ये लास्ट पेज था. ये लास्ट पेज था यहाँ तक. like calculating the extent of reaction ये लिखा था हमने. Yes sir. Yes, sir. Okay. Calculating the extent of reaction, both subjective thought process and numerical analysis, ये दोनों बताया था मैंने आपको. Yes. इसके नीचे भी हुआ था. इसके नीचे क्या करा लिया था? Strong acid plus strong base. हाँ मतलब No, this was the last. No, sir, this was the last. यहाँ तक ही किया था. कहाँ तक किया था फिर? थोड़ा सा आइडिया दो ना. तो ये लास्ट पेज था. यहाँ तक किया था. Last page. हाँ मतलब इतना लिख लिया था ना. हाँ, sir. इतना लिख लिया था. Okay, that is what I was trying to understand. And जो homework मैंने आप लोगों को दिया था वो आप लोगों ने try करा? Yes sir, completed. Yes, sir. Complete. Homework is done. Yes. Yes, sir. तो easy questions ही थे, DPPs और module भी. हाँ मतलब I think ज़्यादा कुछ problem नहीं आया होगा उसमें because बहुत easy सा ही part दिया था मैंने. आज हम लोग थोड़ा सा calculation सीखेंगे and आज की क्लास का homework will be where you would be looking to solve more questions from chemical equilibrium. अब डिस्कशन कब करेंगे? डाउट क्लास लग रहा ही नहीं आपके. नहीं वो तो अभी रेगुलर लेक्चर में ही कर लेंगे. फिर ऐसा नहीं है कि डिस्कशन क्लाउड क्लास नहीं लगा तो डिस्कशन नहीं ठीक है होगा. सर. वी विल हैव टू डू इट समवेयर इन द क्लास इटसेल्फ. बट वही है ना, आई थिंक आप लोगों का अभी यूनिट टेस्ट वगैरह चल रहा है तो इसके लिए अभी देयर आर नो. Yes sir. हाँ सर, अभी यूनिट टेस्ट चल रहा है. वही चीज है कि अभी कितना लोड करेंगे आपको. Sir, today will be second lecture ना? No, third. Third. And sir, आप मेजर टेस्ट के डाउट्स कभी लोगे? मेजर टेस्ट का भी डिस्कशन कर लेते हैं. सो वी विल क्लब अ सेशन in which we will do the discussion of doubts plus MT itself. ठीक है. So, sir, should we do it tomorrow? Because if we do this कल और आज दो ही lectures है ना. अच्छा ऐसा है तो मतलब आज और कल ही है बस. हर वीक यही रहता है. मंडे ट्यूसडे नॉर्मल लेक्चर, वेडनेसडे एक डाउट लेक्चर. Yes, sir. ठीक है ऐसा है. चलो फिर कल ऐसा ही कर लेते हैं. लेट्स डू अ डिस्कशन टुमारो इटसेल्फ. Yes, sir. नो ये वाला मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में लिखवा दिया था. दैट बेस्ड ऑन द equilibrium constant we are able to comment on the extent of reaction alpha value, right? And in the numerical analysis I spoke about this format. This is an extremely crucial format that we are going to use in problem solving, which will help bring structure to our thought process, right? So in the start you will have, right, whatever the initial amount of reactants or products that is given to you. Then in the second line you will have R/P. R/P stands for reacted / produced. And equilibrium par what will be the reactants or products ka amount. And once you have that, ठीक है, ये जो x का वैल्यू होगा, like assuming initial data दिया हुआ है आपको, initial moles कितने हैं, तो ये x का वैल्यू आप कैसे सॉल्व करोगे? You will use the equilibrium amount and the k का वैल्यू, equilibrium constant का वैल्यू, वहां से you will solve for the value of x. ठीक है, I'll make you solve couple of questions right now, and based on that we'll also figure out areas जहां पर आप लोग careless mistakes करोगे. ठीक है. अच्छा,
ये वाला जो फॉर्मेट था ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था. यहाँ पर नोटिस करना, देयर इज वन मोर मेंशन ओवर हेयर, जहाँ पर it's written that sometimes we use alpha directly into this analysis, which is simply, can you see यहाँ से x is equal to what, a times alpha. Yes, sir. तो मैंने यहाँ पर वही x को a अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया है. ठीक है. तो rather than let's say creating a new variable that is x, मैंने सीधा अल्फा के फॉर्म में ही लिख दिया. And I will be doing this sometimes to do questions in a faster manner. ठीक है, कि अल्फा पूछा है तो इनिशियल मोल से ए है, तो ए अल्फा रिएक्ट हो रहे होंगे, एंड एज पर स्टोइशियोमेट्री जितने भी यहाँ पर ए अल्फा प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो इक्विलिब्रियम पर दिस विल बी ए वन माइनस अल्फा, दिस इज ए अल्फा. ठीक है, इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया करेंगे. दैट इज समथिंग आई वुड बी डूइंग रेगुलरली, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे ऐड करके आपको दिखा दिया. ठीक है. नाउ गिवन दिस अंडरस्टैंडिंग, आप इस क्वेश्चन से स्टार्ट करो अपना एनालिसिस. ठीक है. तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, गिवन द वैल्यू ऑफ के, initial amount of reactants and products, we are going to do couple of questions where we are going to ask you to get the equilibrium amount or concentration of the species, reaction species, and the extent of reaction alpha. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपके सामने, a plus b is giving c and kc is equal to 2 mole inverse. Volume of the solution is 2 liters and you are given that if you begin with 1 mole of c, then what would be the equilibrium concentration of A, B, and C? So could you zoom in? हाँ. पॉपअप करे जा रहा है बार-बार सिंक का.
ऑलराइट, ट्राई करा आप लोगों ने, कुछ आंसर आया? So one second. So 1 second. ठीक है, सो हो सकता है हाँ वंश, मतलब दैट माइट बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट? कपल ऑफ लर्निंग्स, ठीक है, व्हिच you should have from this are as follows. So you start by using the format. You write the equation a plus b is giving c, and in the start, right, you are going to do is perform the mole analysis because moles ka data diya hua hai. 1 mole of c, nothing of a and b. Now naturally the reaction will proceed in the backward direction to attain equilibrium. So let's say if x moles of c got reacted, then x moles of b and x moles of a will get produced. Why? Because the coefficients are all 1 only. Now at equilibrium, this will be 1 minus x, b and a will be x and x each moles. Now after this format, how do I go about solving the value of x? I use the equilibrium constant. Now यहाँ पर somehow एक careless mistake हो जाती है स्टूडेंट से, that मैंने k का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, and somehow students assume कि अरे रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, तो फिर they would assume c to be reactant and a and b to be product, and they might write k as the reciprocal of this. ठीक है, they might write, because k का definition था ना products का activity raised to the power of their coefficient upon reactants का activity raised to the power of their coefficients. But ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पे जैसा आप रीड करोगे, it does not matter whether the reaction is going forward or backward. The convention that we have all agreed upon is when you have a written form of reaction, whatever is written on the left hand side is reactant, whatever is written on the right hand side is product. And the expression of k is product upon reactant raised to the power of their coefficients. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that should not be any confusion going forward. Second thing, यहाँ पर जब solve करते रहेंगे तो I'm sure that some of you might have made the mistake of this 2 is equal to 1 minus x upon x upon x. No, sir. No, sir. Volume. ठीक है, नहीं है, मतलब I know there are some, ऐसा नहीं होता, मतलब there would be some जिन्होंने mistake करी होगी. So it's a common mistake because we are in a haste. तो हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि हम लोग यहाँ पे concentration लिखना होता है, not moles. तो you have to divide by the volume, and as a consequence यहाँ पर एक quadratic बन रहा है जिसको आप solve करोगे तो दो values आ जाएगी, एक आएगी √5 - 1/2 और एक आएगी -√5 - 1/2. Now out of these two, ठीक है, always it will be the case that one will be acceptable
and one will be rejected. Now which one is rejected? So यहाँ पर you can see that the negative value of X would mean the negative moles of A and B. Yes, sir. है ना? Yes. So that is not something which will make sense. So this value √5 minus 1 upon 2 is what we accept. And once we accept that, then अब आपसे जो आंसर पूछा जा रहा है, ठीक है, अगेन वो कॉन्सेंट्रेशन का पूछा जा रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय द वॉल्यूम, ठीक है, बिकॉज इक्विलिब्रियम पे क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन थी, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वो पूछा जा रहा था. तो मोल्स हमने यहाँ पे x 1 माइनस x निकाल लिए थे, ठीक है. एंड ऐसा होगा दैट ऑप्शंस में आई वुड बी गिविंग एन ऑप्शन जिसमें वन ऑफ द ऑप्शंस विल बी √5 माइनस 1/2, ठीक है, जैसे लेट्स से A का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है एंड द अदर विल बी √5 माइनस 1/4, ठीक है. सो यू माइट in a haste because you have calculated the value of x and generally x is the answer, you might end up marking that as an incorrect option, ठीक है. तो ये छोटी छोटी केयरलेस मिस्टेक्स को कैच करना रहेगा, स्टार्टिंग में करोगे कोई दिक्कत नहीं है. एंड अगर कर भी रहे हो या कुछ ऐसा डाउट भी आ रहा है तो पूछ लेना, ठीक है. देयर इज नो प्रॉब्लम आस्किंग एनी ऑफ द स्टूपिड डाउट दैट कम्स यहाँ पर इस स्टार्टिंग फेज ऑफ द चैप्टर में, बिकॉज दैट विल बी गुड फॉर द क्लैरिटी ऑफ द एंटायर क्लास. ठीक है. Yes, sir. तो जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो, ठीक है. दिख रहा है? और सब क्लियर. ठीक. सर केसी मोलर कंसंट्रेशन वाला था ना? यस. हाँ, द टेबल इज एन इम्पॉर्टेंट मेथडोलॉजी और फॉर्मेट. मैंने तो पूरा मूल कंसेप्ट ही इस फॉर्मेट में पढ़ाया था स्टूडेंट्स को. हाँ सर. Sorry, because this format is something that we use consistently in many chapters, ठीक है. Start as per the literal name of it would mean कि हाँ start में क्या situation है, whatever is the amount of reactants or products that is given to you, आप वो note down करोगे. Then you would want to note down कि कितना रिएक्ट हुआ है या कितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है. दैट इज समथिंग which typically would be what you are looking at, what you are trying to find, ठीक है. तो वहां पे वेरिएबल्स लेने में कोई हेजिटेशन नहीं शो करनी है, ठीक है. एंड कितना रिएक्ट हुआ है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब आपस में कैसे होता है, स्टोइशियोमेट्री से रिलेटेड होते हैं, कोफिशिएंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है. तो उनको कोफिशिएंट से रिलेट कर देना बिना किसी प्रॉब्लम के. एंड देन once you are done with what is reactant produced, you can then answer equilibrium पे क्या होगा, ठीक है. समझ में आया स्मिथ? इक्विलिब्रियम पार्ट नहीं समझा. इक्विलिब्रियम पार्ट में कहाँ अटक गया? लाइक अगर स्टार्ट में C का 1 मोल था और X रिएक्ट हो गया, ठीक है, इसलिए मैंने -x लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इक्विलिब्रियम पे 1 - x रहेगा, है ना. अगर ये X रिएक्ट हो रहा है, राइट, इसके कोफिशिएंट 1 है और इनका भी कोफिशिएंट 1 है, तो इसका X रिएक्ट हो रहा है तो इसका X प्रोड्यूस होगा, राइट. यहाँ पे +x रहेगा, है कि नहीं. ये भी +x रहेगा और स्टार्टिंग में ये कितने थे, 0, तो इक्विलिब्रियम पे कितने रहेंगे, x and x. ठीक है. तो जिसने कर लिया, टेक एन अटेम्प्ट एट दिस क्वेश्चन
सर हाँ सर अभी आपने ऊपर वो केसी का एक वो नोट लिखा है एकदम राइट में सर, वो मतलब क्या है, मिस्टेक जो करते हैं वैसा कुछ है? आपने बोला था वो मेरे को समझा हाँ, नहीं। नहीं तो जैसे यहाँ पे रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा था ना, यस सर। तो व्हाट हैपेंस इज दैट बैकवर्ड जा रहा है तो अब एक टेंडेंसी क्या रहती है स्टूडेंट्स की कि अरे बैकवर्ड जा रहा है मतलब ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, है ना। हाँ और फिर वो यस सर। के कैसा लिख देंगे, हाँ उल्टा लिख प्रोडक्ट, देंगे ए बाई बी अपॉन है ना। सी। राइट, सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, दैट इज व्हाट आई एम ओके सेइंग सर। कि shouldn't be done, फॉरवर्ड जाए बैकवर्ड जाए दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। व्हाटएवर इज द ओके रिटन सर। फॉर्म दैट डिसाइड्स रिएक्टेंट किसको बोलना है, प्रोडक्ट किसको बोलना है। ओके सर। सर जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें हम किसी में भी मतलब मतलब जो प्लस और माइनस मतलब कोई भी डायरेक्शन ले ले तो आंसर सेम ही आएगा। अच्छा ये वाले क्वेश्चन में ना, हाँ सर जो भी है। ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट इट। ओके सर आपने ऐसा बोला था ना, लेकिन कि जो राइट में होता है उसको ही हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, लेफ्ट के वाले को रिएक्टेंट लेते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है हमेशा। वही तो मैंने अप्लाई करा अभी, दैट इज व्हाट आई सेड। तो सर फिर कैसे भी जाएंगे तो सेम थोड़ी आएगा। नहीं तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि कैसे भी जाओ, फॉरवर्ड जाओ बैकवर्ड जाओ, डजंट मैटर, कन्वेंशन क्या फॉलो करना है कि जो रिएक्शन रिटन फॉर्म में आपके सामने है उसमें जो भी राइट हैंड साइड पे लिखा है दैट इज द प्रोडक्ट, एंड जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है दैट इज द रिएक्टेंट, एंड जो के का एक्सप्रेशन है वो रहता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स, ठीक है। क्लियर है? Yes. अच्छा इस वाले क्वेश्चन में पढ़ पा रहे हैं आगे? So here, suppose if we say that X moles of A and B react, okay, and X moles of A and X moles of C form. But here, if we get X negative, then it's possible now, because what if it's A and B are forming from C instead? So then, X can't be greater than 2, right? करेक्ट no, करेक्ट, no, नहीं no, नहीं, I'm not solving it. I'm just asking. हाँ तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, देयर इज एक्चुअली नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। वैसे तो यू कुड हैव जज्ड बेस्ड अपॉन द क्यू वैल्यू वेदर द रिएक्शन इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। तो कैसा है, हम लोग रिएक्शन लिखेंगे फिर अपना फॉर्मेट फॉलो करेंगे। स्टार्ट दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ ईच, तो वी राइट 2 2 2। देन रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड के लिए फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता है, आई ऑल्सो शो यू हाउ फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू कैन ऑल्सो टेक अ like informed decision where you calculate the value of Q. You remember Q, reaction quotient? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे आप Q का वैल्यू कैलकुलेट करोगे स्टार्ट में, तो ये 2/2 लाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, तो Q का वैल्यू 1 आ गया एंड K का वैल्यू 2 दिया हुआ है, दैट मींस Q इज लेस देन K, सो द इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड बाय गोइंग इन द Forward फॉरवर्ड direction. डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इवन इफ आपने उल्टा लिया होता तो भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। आई विल शो यू पहले एक बार, अभी यहाँ पे हमने ये मेहनत कर ली है क्यों निकालने की, तो हम लोग अवेयर हो गए कि चलो फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन, से कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स राइट फॉरवर्ड गोइंग रिएक्शन। सो ये 2 यहाँ पे फिर -x, so ये भी -x एंड दिस विल बी +x। Why +x? Because this will be Produced. प्रोड्यूस्ड पार्ट। तो इक्विलिब्रियम पे अब स्टार्ट में ये 2 था और x कंज्यूम हो गया, तो इक्विलिब्रियम पे कितना रहेगा 2 - x। स्टार्ट में ये 2 था, इक्विलिब्रियम पे कितना रहेगा x कंज्यूम होने के बाद में 2 - x। स्टार्ट में 2 था और प्रोड्यूस हो गया x, तो इक्विलिब्रियम पे 2 + x, राइट। सर So this completes my mole analysis.
How do I solve for the value of x? The value of x can get solved using the expression of k. Equilibrium constant. Right? Products का concentration upon reactants का concentration raised to the power of their coefficient. Again, don't forget the volume and don't forget the coefficient. यहाँ पर तो अभी मैंने simple examples रखे हैं जिसमें सब में coefficient 1 है, but that is also an error or a careless mistake which sometimes students do, that they might forget the coefficient जो पार में चढ़ाना होता है. तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करोगे mistakes but उन्हीं से सीखना होगा. Now, as I again can see, यहाँ पे quadratic form होगा, and once the quadratic is formed, you get two solutions, and you can see both the solutions are positive. ठीक है, x का value 5 plus root 17 by 2 suggest हो रहा है या फिर 5 minus root 17 by 2 आ रहा है. Now, how do I judge which to accept, which to reject? So you never just look at x and accept or reject the values. You have to look at the moles. ठीक है, तो ये जो x है इसको अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो it should not yield any negative moles. ठीक है, that is going to be a problem then, right? तो यहाँ पर अगर मैं 5 plus root 17 by 2 को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो it will give me negative moles of A and B. So that is not acceptable. That is the rejected value. 5 minus root 17 by 2 will be the accepted value. ठीक है, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपको मोल्स मिल जाएंगे and then you can solve for the concentrations at equilibrium. सर ठीक है, हाँ. Yes, अब sir. बताओ सर क्या आपको doubt के है? का वैल्यू और वॉल्यूम का वैल्यू किधर से पता चला? क्वेश्चन में लिखा Given नहीं the है यहाँ question. पे. हाँ, ओके लिखा ओके तो है. यस सर. हाँ सर, वही मैं सोचा सर. और भी किसी को डाउट था? आई थिंक समवन वाज ट्राइंग टू आस्क. हो गया सॉर्ट? आपने रिजेक्ट किया फर्स्ट वाले को. अरे it was rejected because if you put that value in suppose A and you find out the moles, then you get negative moles. Or he's talking about the moles of A left when equilibrium is achieved. Yes. Can't have Yes. negative moles of A left. Got it. So could you like just show the question once? सर अभी जो आपने रिएक्शन दिया उसमें हर इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, इसके लिए अभी तक की इजी है थोड़ा. मैं बताऊंगा कि मतलब मान लो क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक बन गई तो क्या करेंगे. विल कम टू दैट. मैं अभी वही डाउट एड्रेस करता हूँ दिव्यांश. So can you scroll down? स्क्रॉल डाउन में तो बस वही है कि आप सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज एंड वो वैल्यूज का राइट दैट थिंग इज अपीयरिंग कि क्या क्या कॉन्सेंट्रेशंस हैं. ठीक है. So you have to verify the direction always. So नहीं नॉट नेसेसरी. मैं वही अभी एड्रेस करूंगा. इतना लिखा सबने? wait, sir, I still have doubts. So Q is equal to 1. Why don't we have to find that every time? Like we should know the direction of reaction so that K का direction, K का value we know. राइट. मैं बता देता हूँ. लेट्स से यू डिड नॉट डू दिस, है ना?
you did not bother about calculating Q and finding out which direction will the reaction proceed in, right? तो फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? How will we go about this? The same What is the thing. way? We So- assume the forward reaction, Just and then find we the get the value of concentration. X. The only thing we So- have to verify is that the moles remaining cannot be negative. हाँ, so यहाँ पर लेट्स से गलती से किसी ने बैकवर्ड अज्यूम कर लिया होता, ठीक है, फॉरवर्ड अज्यूम कर लिया होता तो ठीक है, मतलब तो लाइक दिन अच्छा है, उनको फिर आज पोकर खेलना चाहिए था, बट लेट्स से किसी ने बैकवर्ड अज्यूम कर लिया तो फिर क्या होगा? सो लेट्स डू दैट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ आई डू दिस थिंग, स्टार्ट में 2 2 2, right? And this is minus x, this is plus x, this is plus x, right? So this is 2 minus x, 2 plus x, 2 plus x, right? Yes. Yes, sir. How do I solve for the value of x? I use the k, so 2 minus x upon 2 plus x, 2 plus x, right? And वो वॉल्यूम का 2 जो था सबका वो यहाँ पे आ जाएगा, like net वॉल्यूम का, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बन रहा है? 4 plus x square plus 4x is equal to 2 minus x, or you can say सर x a square प्लस plus बी प्रोडक्ट 5x. होगा ना? नहीं, मैंने क्या बताया? Whatever is the written form of the reaction, उसके हिसाब से चलना होता है. राइट हैंड साइड पे जो लिखा है वो अच्छा, प्रोडक्ट है. ओके सर, मेरे को लगा बैकवर्ड बोल रहे तो वो हाँ, प्रोडक्ट हो तो जाएगा। और वही आई थिंक तुम थोड़ा सा लेट ज्वाइन करे, बिकॉज तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने पिछला एग्जाम्पल करवाया था, सर मैं पहले से ही था। तो तुम फिर शायद बिना नहाए धोए मुंह धोए बैठ गए हो, नींद में चल रहे हो तुम. अरे सर नहीं, मतलब हाँ, और क्या, पर तुम पूछ लो, चलो तुम्हारे सहपाठियों से पूछ लो कि मैंने कितना लाइक 3 या 4 बार सेम चीज को रिपीट करके बताया था. इनफैक्ट लास्ट क्लास में बताया था. व्हाटएवर इज द रिटन फॉर्म उसके हिसाब से जाना है. राइट हैंड साइड इज प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज रिएक्टेंट, डजंट मैटर रिएक्शन आगे पीछे जा रहा हो. ओके। So it is assuming forward reaction or backward reaction, not the change of products and reactants. क्या कुछ पूछा तुमने? No, so just telling him like why it doesn't happen. अच्छा, तो एनीवेज कमिंग बैक, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो ये क्वाड्रेटिक का रिजल्ट क्या आ जाएगा? -5 माइनस रूट 17/2 एंड -5 प्लस रूट 17/2, राइट? ये भी नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है. विच इज द वन दैट आई शुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट? Both. First वाला reject So होगा. you have to check. Now moles remaining. I don't reject Check and based on the decide. value of x, ठीक है. दैट इज नॉट माय जजमेंट कि x की वैल्यूज के बेसिस पे मैं रिजेक्ट करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा. I will have to put the value of x and check out the moles. So this becomes rejected. Why? Because when I put this, ठीक है, in here, so I will get moles of A and B as negative. ठीक है. It will not happen if I put this. That is not going to yield me negative moles. So this is acceptable solution. ठीक है. You Okay. check by putting it and checking for the moles. Acha, now that I have figured out which is the acceptable solution, but can you see the x value is negative has given me the answer that my assumption of reaction going backward was wrong, rather the reaction went forward. Automatically calculate करके वो आ गया. Like x का value अगर मैं यहाँ पे put कर रहा हूँ और वो negative values है, तो you can see ना that A and B are getting reduced and C is getting produced. तो reaction forward गया. Right? So Yes, even if you did not calculate the value of Q, कोई दिक्कत नहीं है. The answer is going to help you figure out whether the reaction went forward or backward. ठीक है? Clear है सबको? हाँ Yes, सर. sir. यस सर। So could you just scroll up once? I take a screenshot. I missed something. So सर तो क्यों ढूंढना नेसेसरी नहीं है ना? नहीं.
लिया स्क्रीनशॉट? Yes, yes, sir. ऊपर वाला भी लेना है? नहीं सर, लिखा सर। ठीक है, तो अभी ये पैराग्राफ लिख के इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, ये स्टार्टिंग के अमाउंट दिए हुए हैं। दिस इज, यू कैन से गिवन, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। Sir, in the previous question, even if we assume the reaction to be going backwards, the concentration will come same only, no? हाँ, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। Okay, sir. आपने वो नीचे स्टार्ट में वो गिवन डेटा दिया है ना, 1 ATM 2 ATM। करेक्ट। आया कुछ आंसर? So 1 minute. Sir, in the given equation, what you have written in the product side,
2HI gas. 2HI. 2HI gas. Okay, sir. I thought it is R. नहीं 2HI. So pressure can't be negative, right? Correct. ओके कुछ हाँ मतलब ठीक है वैसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी ठीक है वंश तुम्हारा आंसर बट let's say if someone wanted to get the details. So you're saying we can just look at the question and answer? मतलब क्योंकि यहाँ पर जितने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं उतने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना Yeah. so technically there is no change in pressure. Yeah, and yeah. ठीक है so that could have been the faster answer. Yeah. ठीक है although let's say if details were asked you know not the total pressure but individually what would be the partial pressure of the gases at equilibrium then also it's not a problem. We could have followed the same approach. We wrote the reaction. Okay. Then we performed our analysis as per the format start, reacted, produced, and equilibrium. And instead of doing the analysis in terms of moles, we went about doing the analysis in terms of partial pressure. Why? Because for constant volume and temperature, moles and pressure are directly proportional to each other for gases. Right. So यहाँ पर we went about doing 1 atm 2 atm in the start then minus x and plus 2x. Why did I do write 2x? So because coefficient of HI. Right, because the coefficient of HI was 2. And then equilibrium पर क्या होगा उसको solve करने के लिए I use the Kp का information. Right, so Kp का information is partial pressure of HI raised to the power of its coefficient upon partial pressure of H2 and partial pressure of I2. So I put the values and solve for the answer. So I get x is equal to 2/3. सर ये नहीं समझा सर क्या पार्ट नहीं समझा सर वो आपने टेबल में कैसे प्लॉट किया टेबल में लाइक स्टार्ट तो आपको दिया हुआ था ये क्वेश्चन हाँ सर ठीक है फिर ये r/p का मतलब क्या होता है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स का क्या चेंज आता है हाँ कितना रिएक्ट हो गया कितना प्रोड्यूस हुआ तो अब यही चीज तो हमें आइडेंटिफाई करनी है तो इसको मैंने वेरिएबल मान लिया वेरिएबल लेने से डरते नहीं अपन तो मान लिया कि अगर इसका x ATM कंज्यूम हो रहा है तो इसका भी x ATM कंज्यूम होगा क्यों दोनों का कोफिशिएंट 1 है और इसका कितना ATM प्रोड्यूस हो गया ओके 2x प्लस 2x है ना हाँ सर तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा ये स्टार्ट में 1 था और x कंज्यूम हो गया तो इक्विलिब्रियम पे 1 - x राइट हाँ सर उस तरीके से हम प्रोसीड कर रहे हैं once we are comfortable with the analysis we start looking for ways of solving the variable. What is the way? This is the way. ठीक है यस सर एक्चुअली ये क्या सर नहीं ऐसे मैंडलोरियन देखा है कि दिस इज द वे हाँ सर देखा है देखा कौन बोला देखा है ट्रैप क्वेश्चन था ये तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगा मैं ये मतलब बैठे बैठे क्या करते रहते हैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैंडलोरियन देख रहे हैं So what is Mandalorian whatever अरे इट इज अ स्टार वॉर्स का दिस इज द आंसर मतलब सर पूरा नहीं देखा है पता है
तुम लोग हाँ मतलब वो देखो वो समझदार है आर्यन, उसने बोल दिया कि लाइक एक्टिंग कर रहा है कि क्या व्हाट, मुझे तो सिर्फ Actually, फिजिक्स so केमिस्ट्री I और don't know मैथ्स what. दिखता है। वो So He basically, डिस्प्ले I है doesn't, don't know सर, what that is. So so he डिस्प्ले doesn't करना follow कुछ Star तो। Wars. So. सर of आपने course. टोटल प्रेशर के लिए ऐसे ऐड कैसे कर दिए? टोटल प्रेशर ये तो डाल्टन्स लॉ है ना, सम ऑफ द Total pressure, पार्शियल sum of प्रेशर्स partial इज pressure. टोटल प्रेशर। ओ हाँ हाँ ओके सर। लिखा सबने? एक मिनट सर। हाँ सर। सर तो मतलब एक्चुअली केपी का जरूरत नहीं था। हाँ, for answering the question that was asked, but let's say if it was asked कि what would be the individual partial pressures at equilibrium, तो फिर x के लिए solve करना पड़ता ना। हाँ सर। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ सर। Yes. Yes, sir. Okay. Now, based upon what we have done till now, there is a quick summary and something important which you will have to keep in mind. So the approach Sir? that we follow in solving these questions that we are going to come across in this chapter a lot is आप format follow करो अपना, ठीक है, that will give you clarity of thought. Reaction लिख के start, reacted, produced and equilibrium. Now उस format में analysis आपको जब करना होगा तो आप मोल्स में एनालिसिस कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन में एनालिसिस कर सकते हो, प्रेशर में एनालिसिस कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कैसा डेटा दिया जा रहा है यू विल हैव टू मेक दैट चॉइस। ठीक है, दैट्स अ चॉइस दैट यू विल हैव टू मेक। आंसर सबसे आता है, ठीक है। इवन इफ I would have done by a mole analysis the previous question, sorry, आंसर मेरा तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। It's just that which approach you take would significantly impact the time that you will take to solve the question. तो कौन सा चॉइस लेना है ये प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको और अच्छे से समझ में आया। सर Also an important point that when you are doing the analysis, don't hesitate to take variables. ठीक है, it is absolutely fine if you take variables and then write equations to solve for that variables. ठीक है, equations भी कौन सी लिखनी होंगी वो आपको क्वेश्चन के डेटा से पता पड़ेगा, राइट। समटाइम्स kc का वैल्यू दिया होता है, समटाइम्स kp का वैल्यू दिया होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन which suits that question, ठीक है, which equation will get you the answer faster. You can write kc in terms of concentration या kc in terms of moles and volume. moles अलग से लिख लो, volume अलग से लिख लो, right? kp partial pressure के terms में लिख लो, या फिर kp kx and p total जो अपने last class में लिखा था ना, क्या था kp in terms of kx and p total, याद है? एक बार notes पलटी करके देखो। Kp is equal to kx into p total raised to minus delta ng. Raised to the power of plus delta ng. प्लस डेल्टा एन Minus Oh volume yeah, के delta. volume was माइनस इस सी केस का है में माइनस, kc was equal to केसी में kn माइनस है, into v raised to the power of minus delta माइनस ng. डेल्टा एन जी। ठीक है, so let's do such like problem solving where we have to make choices and get answers, and while making choices I will show both the options से answers आ जाते हैं। कैसे आते हैं वो हम लोग
इसको लिखने के बाद देखते हैं। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? Sir, can analysis be done with volume? बिल्कुल। Okay, sir. वॉल्यूम का आपने यूडियोमेट्री में तो करा ही होगा ना? Yes, sir. वहां पे प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, तो वॉल्यूम आर प्रोपोर्शनल टू मोल्स। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने टोटल प्रेशर फाइंड किया 3 atm, सर उसको हमने आगे किधर यूज नहीं किया है ना? नहीं, उसका जरूरत नहीं पड़ा। वो तो मतलब वही पूछा जाता, आंसर वही था। हाँ सर, मतलब क्वेश्चन में पूछा था इसके लिए हमने फाइंड किया, पर आगे कैलकुलेशन में किधर यूज नहीं किया था ना, वैसा पूछ रहा हूँ। हाँ, Done, sir. One sec, sir. जिसने लिख लिया है, they can start working on this question. So the value of K is not clearly seen. हाँ, वो लिखा हुआ है, वैसे तो वहां ऊपर भी लिखा हुआ है क्वेश्चन। Here certain pressure at equilibrium is 380 watt. Tor, T-O-R. और TORR नहीं सुना कभी पहले? नहीं सुना डीसी स्टेट भाई। 1 torr is equal to 1 mmHg. 760 torr is 1 atm. सर वो 2NO2 गैस के बाद आपने क्या लिखा है? US 0.66 atm. is KP is KP is at 46 degrees centigrade. KP of the reaction, this is the reaction, is okay 0.66 atm.
Sir, ATM to torque convergent. 1 ATM is 760 torque. 380 upon 716 torque. That's a very bad value. नहीं, काफी अच्छा आता है. सर मेरे को Okay, fine. X का So, value. what are the choices that you made? Like, did you do the analysis in moles or partial pressure? Partial pressure. Partial pressure. Okay, let's say you decided to do the analysis in partial pressure. 0.6 आ रहा है मेरे को. नहीं. तो यहाँ पर आई होप जब हम फॉर्मेट लिख रहे हैं, राइट, तो उसमें आपने स्टार्टिंग में पार्शियल प्रेशर 1 तो नहीं मान लिया into O4 का? No, sir. नहीं सर. सर नहीं माना ना, ठीक है. तो that is one important thing to highlight. So you wrote the reaction N2O4 giving 2NO2. You followed the format: start, reacted, produced, and end. And in that format you did partial pressure analysis. So start में N2O4 ही है. Let the partial pressure be capital P. ठीक है. We don't hesitate taking variables. Then क्या हो रहा है reacted produced में? Say minus So P. why for you take both the N2O4. variables the same? So No, one So, is capital P, one is small p. okay, yeah. So in reacted and produced, say minus small p is the amount that got consumed. So plus 2 times small p will be the amount that got produced of NO2. So equilibrium P, you will have N2O4 as capital P minus small p, and NO2 will be 2 times small p. Correct? So you got 2 variables, not really a problem. We have sufficient data to solve for those 2 variables, right? One is the information about total pressure, right? And the other is the information about Kp. One thing to take care is units. Okay, when you are going to solve for the equation of Kp, ensure that यहाँ पर partial pressure ATM में है, तो जो total pressure का data है वो भी ATM में लिखो ना, not in terms of torque. So यहाँ पर that is what you will do. You will write it in terms of ATM
तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप सॉल्व करोगे तो कैपिटल P आ जाएगा 1/3 एंड स्मॉल p आ जाएगा 1/6 and alpha which is alpha which is reacted upon initial amount, so that is something you will solve for. You will get that 50% got reacted, so that is your value of alpha. ठीक है, ये समझ में आया? So why do we have to take ATM again? कंसिस्टेंसी रखनी है ना आपको यूनिट्स की, तो अगर केपी का डेटा एटीएम में लिखा है and I'm going to then use the partial pressures in ATM only, so that is what is going to then make sense to me. Yes. ठीक है, I have also another method like solve the question using this thing as well. क्या बोलते हैं, mole analysis, but that is next. तो आप एक बार इतना लिखो and then we'll look at the mole analysis. The choice that we made in this question was solving using partial pressure analysis and Kp का equation, right? Sir, in the starting, why didn't we use 1? In the starting, सर मतलब वो नया वेरिएबल कैपिटल P क्यों लिया, मतलब 1 क्यों नहीं ले सकते? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सही, उसका आंसर ये रहा आपके लिए. ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आया? Like his question was that why didn't we? हाँ सर वो समझा, 1 minus x minus 1 है ना, why didn't we take the initial pressure to be 1 atm? तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे that pressure का hard data दिया हुआ है ना, it is mentioned that the pressure will be 2/3 atm at equilibrium. So how could you assume a value there? ठीक है, So what do you mean by hard data? न्यूमेरिकल डेटा मतलब वेरिएबल्स के टर्म में नहीं, सर्टेन वैल्यूज के लिए वो वाला डेटा का मतलब ट्रू रहेगा. I didn't understand. अरे व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर प्रेशर 1 atm लिया सो मे बी यू वोंट गेट व्हाट दे आर गेटिंग ना, मतलब फॉर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ प्रेशर यू विल गेट दैट आंसर. So it's like if something is mentioned about the pressure in the question, then we can't assume initial pressure is 1. If it's nothing given that point of time, we assume it as 1. तो अभी जैसे मोल एनालिसिस में अगला फॉर्मेट में सॉल्व करूंगा आपके लिए, तो उसमें आप नोटिस करना मैं स्टार्टिंग में मोल्स 1 ले लूंगा, ठीक है, N2O4 का. अभी मैं जस्ट इसके नीचे जो ये मोल एनालिसिस वाला दिखाऊंगा ना, why would I be able to take that as 1? Because no hard data of moles is given. मैं वेरिएबल भी ले सकता हूँ as well as वैल्यू भी ले सकता हूँ. So we didn't take partial pressure as 1 because total pressure in the end was given as 0.5 and we assume a closed system, so that's why moles can't escape. Correct. And moles can't reduce also. नहीं मतलब ओवरऑल मोल्स तो चेंज हो ही रहे हैं ना. Yeah, but it's increasing. Correct. Sir, how does the K is equal to P reacted upon P initial give the percentage dissociation? How is what?
So how does the K card you use that according to the definition of K, P reacted upon P initial, and then you got 50%. How is that the percentage of P initial? Because the definition of alpha is reacted upon initial. मतलब that is how we calculate Yeah, the कितना extent तक reaction गया है. That's मतलब तुमको मैंने like 2 आलू दिए और तुमने 1 आलू खा लिया, तो what is your percentage consumption? जितना खाया upon initially जितना दिया था. Yes, sir. Yes, sir. So, so in this question, I did like the same thing, but like I don't get why you can assume moles 1 in the method 2. So moles 1 in the method 2 नहीं, did not get you. So he's saying हाँ, तो वो वही चीज मैं बता रहा हूँ ना, that is what I'm talking about. यहाँ पर ये सबने लिख लिया है क्या पार्शियल प्रेशर वाला तरीका? Yes, और sir. आपने रिएक्टिविटी कैसे, मतलब वो कैसे निकाला, कितना ये हो गया परसेंटेज? अपना फॉर्मूला है ना, मोल्स रिएक्टेड. अच्छा वो है, ओके ओके, अल्फा फॉर्मूला है वो. को लगा आपने वो के लिखा था. हाँ, मेरे को भी वही. मतलब के का भी एक्सप्रेशन लिखा था. So, in the second approach, I did the moles analysis and I took the starting as A, and then I said that X moles of it got dissociated to form 2X of NO2. Okay, and then I solved using Kp, Kx, and Pt. Perfect. But then in delta Ng, do you take 2 minus 1 or you take 2 minus 1 only? No? Yeah. Okay, then after that, I realized that what we actually want is x upon a into 100. So then you can solve for x upon a from the equation, and then I got something very bad. Like नहीं तो approach तुम्हारा एकदम ठीक है. Just maybe something happened in the calculation. I'll do it for you, not a problem. तो यहाँ पे let's see if we would have done mole analysis, right, and used this equation. ठीक है, Kp is equal to Kx P total raised to the power of delta Ng, right? Why would I have used it? Because Kp का data है, P total का data है, तो obviously that thought comes to my mind कि अच्छा ये equation use कर लेते हैं, right? आपका आंसर Kc यूज करके भी आ जाएगा, ठीक है, that is not a problem. You could have got the answer using Kc as well, but I would avoid it using it because it will become a like more cumbersome exercise. वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर उसका वेरिएबल बनाओ और फिर और सॉल्व करते जाओ, आंसर आएगा, कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे पर और. हाँ, कॉम्प्लिकेट कर देंगे. तो लेट्स यूज दिस सिंपल अंडरस्टैंडिंग दैट्स वी यूज मोल एनालिसिस, राइट, एंड बेस्ड ऑन दैट मोल एनालिसिस वी विल गेट द आंसर. तो मोल एनालिसिस में स्टार्टिंग में N2O4 के मोल्स कितने हैं, देयर इज नो हार्ड डेटा का इंफॉर्मेशन गिवन, तो इट्स ओके इफ आई अज्यूम द मोल्स ऑफ N2O4 as 1. Let's say you decided कि नहीं मुझे नहीं assume करना है, 1 नहीं assume करना है, let's say I'll keep it a variable A, कोई दिक्कत नहीं है. तो let's say A 0, right, minus x plus 2x, ये A minus x, Yes, sir. है कि नहीं? yes. अच्छा, and how do I solve for x? I solve for x using Kp. Kp is equal to Kx P total raised to the power of delta Ng, right? Now Kp का वैल्यू 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, P टोटल का वैल्यू 0.5 ATM दिया हुआ है, राइट. 380 टॉर को ATM में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है. मे बी यहाँ पर शायद तुमने एक गड़बड़ कर दी हो, ठीक है, बिकॉज ये Kp जो है वो 66 upon 100. That's why I was probably getting a bad value. नहीं, हाँ मतलब मे बी 2/3 was a better approximation for it. And यहाँ पे डेल्टा Ng का वैल्यू भी 1 है, ठीक है. अब इसके बाद में यहाँ पर आपका
ये moles upon total moles, ये आपके mole fractions हो जाएंगे. And Yes. of course, don't forget the coefficient that goes in the power. Okay. Now, upon solving, you will not get the value of x, you will not get the value of a, but you will get what you require, that is x upon a. So if I solve it 2 by 3, I get it. तो ये आपका मोल एनालिसिस से भी आंसर आ जाएगा. ठीक है. You could have like reduced the complication by using starting में 1 mole, right? तो यहाँ पर कब आप वैल्यू ले सकते हो एंड कब आपको वेरिएबल अज्यूम करना चाहिए इन द स्टार्ट, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन का डेटा. ठीक है. इफ देयर वाज हार्ड डेटा ऑफ मोल्स, आई वुड हैव नॉट अज्यूम्ड वैल्यू कि 1 मोल से स्टार्ट कर लेते. नहीं, देन आई वुड हैव अज्यूम्ड वेरिएबल ओनली. ठीक है. जैसा ऊपर पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने अज्यूम नहीं करा, वी डिड नॉट अज्यूम द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर टू बी 1. समझ में आया सबको ये सेकंड मेथड भी? हाँ सर. सर मेरे को वो हार्ड डेटा वाला पार्ट नहीं समझ रहा सर. मतलब कैसे आप 1 ले रहे हो और कब आप पी लिया सर. करेक्ट. तो अपन क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं. ठीक है. तो इसमें आपको क्या क्या डेटा मिल रहा है व्हेन यू रीड द क्वेश्चन अगेन? सर N2O4 का 1 गिवन है और NO2 का 2 गिवन है. क्या 1 और 2 गिवन है? तो कोएफिशिएंट है. नहीं एक हाँ सर, कोएफिशिएंट है उसी को बोलने दो, है ना? बिकॉज आई नो दिस इज अ बिग लाइक प्रॉब्लम विच स्टूडेंट्स हैव. कोएफिशिएंट दिया है ना 1 और 2? यस सर, कोएफिशिएंट दिया है. राइट. ये क्वांटिटीज तो नहीं है 1 और 2? हाँ, है ना. ये 1 और 2 Yes, sir. मोल्स तो नहीं है, ये 1 और 2 प्रेशर भी नहीं है ना. ये तो कोएफिशिएंट है बैलेंस्ड इक्वेशन के. यस सर. ओके. फिर और क्या दिया है सर? मतलब बाकी सर टेम्परेचर गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन है एंड Correct. केपी गिवन है. तो टोटल प्रेशर गिवन है ना. तो ये हार्ड Yes, डेटा हो गया. यस सर, परफेक्टली गिवन है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज हार्ड डेटा की वैल्यू गिवन है भाई कि इक्विलिब्रियम पर इतना प्रेशर रहेगा. यस सर. तो दैट इज व्हाट यू रिकॉग्नाइज. एंड देन से अब आप पार्शियल प्रेशर में एनालिसिस कर रहे हो तो आप वैल्यू नहीं अज्यूम कर सकते कि मैं कितने प्रेशर से स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है. मैं यहाँ पे 1 atm नहीं लिखना चाहूंगा ना, क्योंकि गारंटी थोड़ी ना है कि मैं वैल्यू 1 atm से स्टार्ट करूंगा तो एंड में 2/3 atm आएगा इसे. ओके सर. ठीक है. यहाँ पे क्या मोल्स का कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है? नो सर, इट इज नॉट गिवन. इट इज नॉट गिवन. ओके. तो फिर कोई हार्ड डेटा नहीं है मोल्स का, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर 1 मोल से स्टार्ट कर सकता हूँ. हाँ, अगर मान लो यही क्वेश्चन होता. ठीक है. एंड इसमें से आपको हार्ड डेटा ऑफ मोल्स मिल जाता. ठीक है. कुछ ऐसा बता देते कि this assume we start with 0.5 moles of N2O4, ऐसा करके कुछ लिख देते हैं. तो फिर it would not make sense to assume any values for mole, क्योंकि हार्ड डेटा मिल गया ना. यस सर. तो आप वेरिएबल में डील करोगे फिर उस केस में. सर तो आपने नीचे 1 अज्यूम किया तो मतलब वो सब तुक्का ही हुआ ना. हाँ, तो मैंने वही कहा कि यहाँ पर इवन इफ आई वुड हैव अज्यूम्ड अ वेरिएबल तो भी मेरा आंसर आता, एंड 1 अज्यूम कर लिया तो भी मेरा आंसर आएगा. क्यों? बिकॉज मोल्स का कोई हार्ड डेटा नहीं दिया हुआ था. ओके सर, समझ गया सर. ठीक है. तो आई तो जनरली प्रेफर टेकिंग वेरिएबल्स. मतलब मुझे वेरिएबल्स लेने में कोई दिक्कत नहीं लगती. इनफैक्ट आई फाइंड टेकिंग वेरिएबल्स इज अ मच बेटर and conceptual approach, but somehow I have seen this कि generally students को phobia होता है.
कि वेरिएबल्स में कैसे मतलब लाइक उनके लिए अचानक से वो एक ट्रांसफॉर्मर्स वाली लैंग्वेज बन जाती है कि ये क्या लिख दिया, नंबर लो तो ठीक लगेगा। So this is probably out, but why is it 2x divided by 1 plus x whole raised egg? Mole fraction. Okay, got it. लिखा सबने? जिसने लिख लिया है start part. That table. आता हूँ जिसको लाइक अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस। इन द मीन टाइम जिसका नहीं हुआ है, in the previous, like the partial pressure analysis, we found out the value of A as well as X. we got the We initial could find out pressure। the value of in X. हाँ, इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल प्रेशर के बाद में कितना रिएक्टेड प्रोड्यूस हुआ वो भी हमने So we can find out the initial moles also like that, right? try, see if you are able to, or are you encountering some problem? So I'll solve the next question first. सर सर जो मेथड 1 में क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का जो 2 आंसर आते हैं ना, उसमें एलिमिनेट कैसे करेंगे? क्योंकि एक में सब्स्टिट्यूट करने पे 0 आ रहा है और एक पे पॉजिटिव आ रहा है, तो 0 हो सकता है ना? पर मोस्टली नेगेटिव और No, पॉजिटिव ही but आएगा ना। if the partial pressure of the gas is 0, that means the gas doesn't exist. Yeah. What are you getting as 0? I don't think 0 आता है, मतलब सर मुझे मतलब क्वाड्रेटिक दोबारा सॉल्व करके देखना। मुझे एक मतलब रूट जो आया आपने 1/6 जो लिया है वो आया 2p स्क्वायर अपॉन p, कैपिटल P कितना हो गया 0.5 माइनस p, तो ये 0.5 माइनस 2p हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3, है कि नहीं? तो ये 12p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4p, तो 12p स्क्वायर फॉर प्लस 4p प्लस 1 इक्वल टू सॉरी माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका रूट 0 तो आ ही नहीं सकता है ना, -1/2 आएगा। Because -1/2 and 1/3. तो सर वो -1/2 वो आया मुझे, पर वो सब्स्टिट्यूट करने पे कैपिटल P की वैल्यू 0 आ रही है। By the way, there is another root. There's 1/3 also which you use. That I got 1/6 and 1/2. कैपिटल P is -4 plus under root of 16 plus 48, that is 64 24 by 24 upon 24, तो 8 minus 4 1/6 आया ना। और दूसरा क्या था 1/2 -4 minus root 64 upon 24, तो यानी कि -1/2 है ना, राइट? अच्छा ओके सर, हाँ ओके
तो प्रेशर नेगेटिव कैसे होगा यहाँ पे? और सर मेरा वो 1/2 ले लिया था मैंने आंसर। ठीक है, ओके। चलो ये वाला ट्राई करो। अब लिख लिया ना सबने ऊपर वाला? Yes. I hope Yes, sir. everyone is sorted with this. यस। चलो ये वाला ट्राई करो। So your volume is not constant, right? That's why I've given the visualization.
आया कुछ आंसर? So sorry, just 1 minute. What are the choices that you have made? So we choose to wait for some time before answering that. So please. No, I am asking like choice in terms of problem solving. Moles analysis Four करा, times. partial pressure analysis करा. Setting mole kx into p total would be good. I shoot in terms of moles. So. ठीक है. आंसर दोनों से ही आएगा, but yes, I think faster approach would be via mole analysis and then kp kx p total वाला term. All right. कुछ आया आंसर? Wait. So that is something, Shrey, you will get to know with more and more practice. Your Shrey ka question is, sir, how to make the choice, like which method to use. As I said, answer sabse aata hai. That's not a problem. But the judgment of which to use will come with more and more practice only. ठीक है, डेटा आप देखोगे तो उससे आपको समझ में आने लगेगा. So, do you get the value of? So we don't know kp. So to find out x, so we can find out x by. So it's not. So the value of kp comes different or what? So Different doesn't it? क्योंकि just that give me a is right. second. The reaction का टेम्परेचर तो भाई k जो है वो सब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. Okay, so. So in both the cases, the k value is same. So, okay, so I just got stuck at something. So, राइट, इतना तो सबने किया होगा जिन्होंने मोल एनालिसिस से करना चाहा होगा. हाँ, वो बेसिक मेथड है ना. रिएक्शन तो लिख दिया, स्टार्ट, रिएक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड इक्विलिब्रियम. अब यहाँ पर you could have assumed a variable also for the initial moles, but as you can see in the question, there is no hard data of the moles.
So I assumed by starting that, okay, let's have 1 mole of PCl5. And since alpha is the degree of dissociation, extent of reaction, तो हम लोग यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं. And equilibrium पे you will have 1 minus alpha moles of PCl5, alpha moles each of PCl3 and Cl2. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Now how do I relate alpha, K and P total? Right? गिने चुने तो equations है. So I made a choice amongst them that ये Kp, Kx वाला would make sense. So I used that and I got the relationship that Kp is equal to alpha square upon 1 minus alpha square into P total. Now, why did I solve for Kp? Was it something that was asked in the question? No, so only Kp is the only quantity that remains constant in case 1 and case 2. Correct. So यहाँ पे अब थोड़ा सा problem solving skill लगता है, where we understand that पूछा तो नहीं था Kp के बारे में, but if I look at case 1, case 2 and try to understand a relationship, तो एक and ये ऐसा है कि आप लिखते जाते हो और आपको स्ट्राइक होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है that I already knew about it कि मैं स्टेप 1 ये करूंगा, स्टेप 2 ये करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा. नहीं, मतलब I followed the approach, ठीक है? इक्वेशन लिखा, एनालिसिस करा और एज एन रिएक्शन लिखा, एनालिसिस करा और इक्वेशन लिख दिया. आई डोंट नो इसका यूज कैसे आएगा, बट देन इट स्ट्राइक्स मी कि अच्छा केपी तो है, वो जो केस 1 का है वही केस 2 का भी रहेगा, ठीक है? आई एम श्योर कई बच्चों को स्ट्राइक किया होगा ये. तो केस 1 में जो एक्सप्रेशन है अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू पी टोटल, दैट शुड बी इक्वल टू द एक्सप्रेशन फॉर केस 2 एज वेल. एंड यहाँ पर केस 1 में अल्फा और पी टोटल दिया है, केस 2 का पी टोटल दिया है, तो उससे अल्फा मेरा आके अप्रोक्सीमेटली 5% आ जाएगा. लाइक अल्फा विल कम आउट टू बी 0.05. That is approximately 5%. समझ में आई? So, said it 10% is equal to x by a to get relation between a and x. I took a variable, not that. हाँ, तो आपका आंसर उससे भी आता, ठीक है? ऑल्दो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता, ठीक है? सो यहाँ पर what would have happened is that you decided कि I would take a variable, है ना? Say A is the initial moles and say X, ठीक है? मतलब A alpha would be the, if alpha is the degree of dissociation, then A alpha would be the moles reacted and plus A alpha would be the moles produced. Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं? या फिर तुमने शायद ये करा होगा, like this would still be easy. You might have done this. PCl5 giving PCl3 plus Cl2, A00 minus x plus x plus x, then A minus x, x and x. And your alpha value Yes, would have been x upon A. है ना? Yes, I did that. Correct. So तो यहाँ पर why do you do that? Like, why do you multiply everything by a? नहीं, because x is A alpha, no? Okay, makes sense, yeah. ठीक है, that's why I said कि I would be using that. अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने ऐसे लिख लिया alpha is equal to x upon a. Now you start working on this. तो आप kp लिखोगे x upon a plus x into x upon a plus x upon a minus x upon a plus x into p total raised to the power of 1. Correct? Yes, right? sir. So we will get x square upon a square minus x square into p total raised to the power of 1. Right? Yes. अब the thing is that यहाँ से x नहीं मिलेगा, a नहीं मिलेगा, but can you see that I can get x upon a? Yes, sir.
ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, दैट इज माय अल्फा, है ना, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू पी टोटल। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आके मैथमेटिकल जगलरी करनी पड़ी, बिकॉज अदरवाइज आई वाज फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि अरे मतलब ज्यादा ही वेरिएबल क्रिएट हो गए, एक्स भी हो गया, ए भी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विद प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे ये फायदा मिल रहा था कि चलो इनिशियल मोल्स 1 ले लो, मेक्स लाइफ इजियर। और even if I wanted to assume a variable, no, then I would have done the analysis in the following manner. तो मेरा a जो होता, जब मैं यहाँ पे लिखता ना मोल फ्रैक्शंस में, तो a पूरा कैंसिल आउट हो जाता, मेरा यही का यही एक्सप्रेशन बन जाता। ठीक है सर Sir, can you please show how to solve this question using partial pressure? बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज आवर मेथड टू। एक बार इसको क्लोज कर लेते हैं। लिखा है सबने, जिसने? सर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपने स्पेसिफिकली अल्फा लिया है, तो मतलब वो एक्स भी ले सकते थे या आपने अल्फा लिया, उसका कोई रीजन है? मतलब अल्फा इज माय सिंबल ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, है ना? यस सर। अब यहाँ हाँ पे सर। मोल्स रिएक्टेड इज अल्फा अपॉन इनिशियल मोल्स 1 है ना, तो वही मेरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हो गया ना। यस सर। मैं चाहता तो x बोल देता, ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स करता, फिर x को क्या बोलता, मतलब x अपॉन 1 को अल्फा बोलता ना। यस सर, इट इज द सेम थिंग। राइट, इसके सर आई वाज डिस्कनेक्टेड अभी, बस यही करा है ना आपने? बस इसी का डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड भी देखेंगे इसका। लिखा सबने ये? So wait a second. So Just a minute. लिखा सबने अभी? nearly done. अच्छा, I will also try to do this question using the analysis in partial pressure. Now, before I start doing that, right, should I start with some value of pressure or variable? वेरिएबल। Why not value? सर हार्ड डेटा दिया है। हार्ड डेटा। करेक्ट, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, एक बार 1 atm था, एक बार 4 atm है, केसेस जो बने हैं 2, तो आई शुड नॉट अज्यूम सम वैल्यू ऑफ प्रेशर। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स लुक एट इट कि स्टार्ट में पी ए मोल्स हो गए, सॉरी पी ए पार्शियल प्रेशर हो गया PCl5 का, नथिंग ऑफ PCl3 एंड Cl2, देन रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड एंड इक्विलिब्रियम। तो रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड में से
minus PB of PCl5 to plus PB and plus PB of PCl3 and Cl2, and as a consequence equilibrium पे क्या partial pressure रहेंगे वो मुझे पता पड़ गए, right? अब इन वेरिएबल्स के साथ वर्क करना है, तो दो इक्वेशन है, एक तो अल्फा है which is PB reacted upon initial, that is PA, that is 0.1, right? And P total is given to me as 1 atm. तो ये इक्विलिब्रियम पे मैंने इन सबके प्रेशर ऐड कर लिए, तो उससे मुझे दूसरी इक्वेशन मिल गई. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व किए तो मुझे पी ए का वैल्यू मिल गया, पी बी का वैल्यू मिल गया, राइट? इससे अब मैंने, वैसे तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट नाउ आई नो दैट केपी निकाल के अगले केस में यूज करा जा सकता है. तो मैंने केपी निकाल लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स raised to the power of their coefficients upon partial pressure of reactant raised to the power of their coefficient, right? So I did that. Now once I got the value of Kp, okay, so I keep it and look at the second case, okay. Now second case mein I again do the partial pressure analysis only, and this time say the initial pressure was PA dash and the amount that got reacted and produced was PB dash. So I create my analysis in terms of these two variables. Okay, I don't hesitate taking variables, it's fine. What are the equations that will come to my rescue to calculate PA dash and PB dash? So Kp and sum of partial is equal to total pressure. Correct. So यहाँ पे एक तो दिया हुआ that the total pressure at equilibrium is 4 atm, so that is one equation that comes to my help, and the other that comes to my help is that Kp remains the same. तो यहाँ से आप solve करोगे तो आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, PA dash PB dash मिलेगा, and alpha dash, once you will calculate PA dash PB dash values, will get as 0.05. Right? इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत थी, like This is painful, so. हाँ, but आंसर आता है, ठीक है, आंसर डेफिनेटली आता है. It's just that it was slightly bit more difficult, or you can say time taking. ठीक है, तो that is what I said कि choice of what to do, partial pressure analysis, mole analysis, KC use करना है, KP use करना है, ठीक है, आंसर सबसे आता है without fail. It's just with more and more practice you will be able to get better at the choice कि क्या लेना चाहिए, किससे faster solve हो पाएगा. Sir, in the beginning, why did we take PA? We should have taken 1 atm, no? Because it is given in the question. नहीं, इसीलिए मैंने आपको visualization करवाया that 1 atm wasn't the pressure which was the pressure like initially, it was the pressure at the equilibrium, or you can say it was a pressure that was maintained. वो जो piston वाला situation है, external pressure 1 atm था, internal pressure भी 1 atm था. Sir. Okay, sir. Sir, if we have copied, we can leave. हाँ हाँ, एकदम फटाक से निकल जाओ, भागो यहाँ से. So can you scroll down? हाँ, इतना लिख लिया सबने ऊपर वाला? Wait, sir. Bye, sir. Thank you. Bye bye. So tomorrow are we discussing the MT? And so what about the homework you gave last week? That I don't think कल होगा ना, क्योंकि MT पूरा discuss करने को time जाएगा. नहीं, कुछ टाइम नहीं जाएगा MT डिस्कस करने में, मतलब hardly there is like solutions वगैरह तो मिल ही गए होंगे आपको. Yes. Wait, did we get solutions? You get it below the question.
There was a PDF sent on the Zenith 7th June group with the question papers and solutions of every paper. I mean, there were multiple PDFs. For each So, section they have given. so could you scroll up just for a second, sir? ठीक है. Any doubts? Any questions? Sir, just a question. जो आपने एग्जांपल दिया था पार्शियल प्रेशर्स पे ऑफ H2I2 gives 2HI, उसमें हमने टोटल प्रेशर निकाला था and I was solving for partial pressures, but I think my answer is going somewhere wrong. Can you like just scroll up to that question? एक मिनट. देखो तुमने शायद कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी होगी. Yeah, I guess I got it. And one more thing, sir, X की value 2/3 ATM आई है. So like if you substitute in the 2x at equilibrium, that would give me 4/3. So like that's fine, right? Because usually partial pressures का denominator is greater than numerator. So just wanted to clarify. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. Yeah, okay. Yeah, just got it, sir. ठीक है. Any other questions? So go back to the bottom. And so one last thing. So what is Mendelian? I'm not kidding, sir. I don't know. अरे ऐसे ही है, मतलब it's a TV series. On Google, you'll see what it is. ठीक है, लिखा सबने, क्लोज करें आज का डिस्कशन. Nearly done, sir. Just last line. हाँ. So done. ठीक. Any other questions anyone has? If no, then let's close the session. We'll resume tomorrow. Sure. All right.